हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक अगेन विथ माय टुडेज अपडेट। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। आई एम ऑल्सो गुड। सो इफ़ आई स्टार्ट विथ टुडेज अपडेट, सो आज इन जनरल कुछ ऐसा है नहीं मुझे। लाइक नॉर्मल डे, नॉर्मल वर्क एंड एवरीथिंग, अगेन डेवलपमेंट, जीरा ट्रैकर्स, जीरा इशूज, बग फिक्सेस एंड ऑल। सो या, डे तो मेरा एवरेज ही रहा, बट टुडे आई वांट टू टॉक समथिंग विच आई हैपेंड इन द नाइट एक्चुअली। लाइक इट इज़ रिलेटेड टू मूवीज़ एंड यू गाइज नो, लाइक मूवी तो मेरा कंफर्ट जोन है. And as I told in my few videos back, like one of my friend is here in our room in her semester break. She actually study in NSD, so she is in acting and theaters. उसने कई theaters किए हैं and movies, not in movies but songs and short films. So today while having dinner we were discussing something. Actually we were watching many videos, we were analyzing, and that is the topic I want to discuss today. अभी आप लोगों ने मूवीज़ देखते देखते चीज़ें एनालाइज की हैं कि कि वो सिर्फ मूवीज़ देख नहीं रहे, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये शॉर्ट शूट कैसे किया गया होगा, इसकी कलर ग्रेडिंग क्या रही होगी एंड ऑल तो मुझे इन कलर ग्रेडिंग वगैरह उतना समझ नहीं आते हैं, बट आई एम ऑलवेज क्यूरियस हाउ दे एक्चुअली शूट द शॉट. एंड नाउ तो वी नो मैनी थिंग्स आर डन इन द VFX और पोस्ट प्रोडक्शंस, बट फिर कुछ मूवीज़ होती हैं जो आज से 30 साल 40 साल पहले शूट हुई हैं. उस समय VFX नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, एवरीथिंग वॉज जस्ट अ कैमरा इफेक्ट, कैमरा वर्क. And these are the things like we were discussing. Even she was curious, she was confused like how they were shot. So that I wanted to discuss. 3-4 shots तो मैंने देखे हैं that I want to discuss, but I want to start this conversation. If you guys have seen anything, you can tell in the comments and what I was discussing. If you guys know how that is shoot, then you guys can also tell. Because net पे मुझे in general कुछ मिला नहीं. So yeah, let's start. Firstly, though, if I discuss with the first scene, actually there are two scenes from the same movie. Have you guys seen 2001 Space Odyssey, a classic space movie of Stanley Kubrick? So उसमें दो scenes थे जो हमारे notice में थे. First one is like, if you remember in the starting when Howard Floyd is going on the moon, a lady comes who offers him dinner, and she picks a pen from the air. But yeah, that was not the important thing. Pen is in the air, can be easily done with the wire works. What was important when before that she enter in one room and camera is there. She comes, फिर वो जाके अंदर से कुछ वो शील्ड फूड निकालती है. She takes the food, she goes back, camera is still there, and then she stops at one place. And as we know that she is in the rocket which has artificial gravity and she is wearing the sticky shoes. So what she does is camera is still there. There is no cut scene. She comes, she takes the food, she goes back in the hallway, and then she start climbing upward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as like this. She take all the way from here to here, and then here she enters in the another room. Then camera finally cuts and we see from the room perspective when she entered. माई क्वेश्चन इज़ लाइक, अगर इसमें कट सीन्स होते तो वी कैन से कि कैमरा को उल्टा घुमा दिया गया होगा, बट यहाँ कोई कट सीन नहीं है. वो शी कम्स तो तब तो वो स्टेबल थी. उसके बाद उसने खाना निकाला तब तक भी था. वो जब तक वहाँ पे गई कैमरा वॉज स्टेबल एंड सी वॉज ऑन द सरफेस. बट हाउ सी एक्चुअली स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन द वॉल. अब इसमें बहुत वायर वर्क की बातें भी कर सकते हैं, बट थिंग इज कि पहले तो वायर को कितना टेंसिल स्ट्रेंथ के थ्रू उस लेडी को संभालना. एंड थिंग इज कि इफ़ यू सी द क्रिस्टोफर रीव्स सुपरमैन और इवन शक्तिमान विच वॉज रिलीज इन 90s, आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि बैकग्राउंड पे डुप्लीकेट फील होता है. एंड वायर वर्क की वजह से उनकी बॉडी, इफ़ यू सी क्रिस्टोफर रीव्स सुपरमैन जो कि 1975 के अराउंड आई थी, स्टिल उसकी बॉडी में यू कैन सी कि हिज बैक इज़ अपवर्ड, बट उसका हाथ हैंड एंड लेग्स आर लिटिल बिट डाउन बिकॉज उसको वायर से लटकाया गया है. तो हाथ और ये पैर उसके थोड़े नीचे होते हैं कंपेयर टू हिज बैक, ऑल द मिडिल बॉडी. यू गाइस कैन सी इट. मतलब मैंने जो नोटिस किया है. बट इन दैट लेडी केस विच वॉज रिलीज इन 60s, नॉट इवन इन 70s, उसकी पूरी बॉडी एकदम स्टिफ थी. तो 2 या 3 वायर्स में तो नहीं हो सकते, मल्टीपल वायर्स में पूरी बॉडी उसकी कैप्चर की हो तो इट इज़ पॉसिबल. बट अगेन वो वायर कहाँ से आए, बिकॉज सी एक्चुअली क्रॉस द होल. सो या दैट वन. And second scene was from the same movie, that classic which has multiple YouTube videos but no one explains it clearly. That Dave Warman jogging scene when he wakes up from his hypersleep and
he is jogging in one circle, one court, what we can say. Inside the rocket, he's walking, jogging in the circle again on the artificial gravity, and camera is at one point, and camera is following him at one point, but at one point, camera is still, and he's just running on the wall. So sometimes he's going up, or sometimes he's coming down, and that is still there. So how it is he actually doing? Even if you keep the things like that, is still, I don't know, like how his body is maintaining if the camera is put here and surface is, I don't know. There are multiple answers on the YouTube, but I don't know. And yeah, so these are the two things we watch. Few more scenes, like a third one was from any Bengali movie. I don't remember the name, but it was the old black and white movie in which a lady crossed from one place and suddenly her clothes got changed without any cutscenes. I don't know the movie name or anything. I just saw that scene. So, and there are two, three more scenes, but I forgot. Actually, while shooting this video, I forgot. But I like how these three, four scenes are made. Like right now, we know we can make even more complicated through VFX work, camera work, post production, anything. But in that era, when there were no computer editing, nothing, no softwares, still Stanley Kubrick achieved it, or that Bangla cinema achieved it. I don't know how. We have seen one similar scene while kids were handling on the sky in the Chota Chetan, but in that case, whole roof was upside down, and that scene was like that was easily explainable. You can easily find the video on the YouTube, but the scene shot by Stanley Kubrick was way more complicated than what was in Chota Chetan. So yeah, this is I wanted to discuss, and actually I want the answers, not that discussion. I want the answers. If you guys know, if you guys have any idea, you can tell. Or if you guys have any more answers or questions or more scenes which you can tell, you can say in the comment. I will definitely watch those movies or those scenes. And these are the things also which make me curious about the cinema, like how these guys actually do it. हम लोग इजीली देख तो लेते हैं, पर हम उसकी पीछे की मेहनत कभी समझते नहीं है कि एक्चुअली वो प्लान कैसे किया गया होगा. इवन इन दिस VFX डेज, उस चीज़ को सोचना, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉप्स लाना, एंड जो भी चाहे, हमेशा आप सुनते हो वी गाइस लिसन की मूवीज़ में कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, उन लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा, बट वो क्यों कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, दैट इज़ समथिंग वी कैन नेवर अंडरस्टैंड. लाइक उसके लिए हमें उसका पार्ट बनना पड़ेगा. सो या दैट वाज द टॉपिक आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस. अगर आपके पास कुछ हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, या फिर आंसर्स हो मेरे क्वेश्चंस का, दैट ऑल्सो यू कैन टेल इन कमेंट्स. टिल देन, बाय बाय. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.